In this video, we are going to solve some more practice questions. Question number 8 of exercise 1A of book D1. I am Durre and I'm going to give free math lessons only on my YouTube channel, Maths with Durre. Let's get started. The question, that is a practical example of square numbers or square roots. The area of a square photo frame is 250 centimeters square. Find the perimeter of the photo frame and then leave your answer correct to the 1 decimal place. So first we need to understand the question statement. Area of a square photo frame जिसकी shape square में है. Have you ever read in previous grade about the square? किस तरह का होता है square? जिसकी all sides equal होती है. Can you just observe here? All sides equal. And remember, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए रिमेंबर दैट कि आपने वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझना है. हर स्टेटमेंट एक मीनिंग रख रहा है, उसको आपने समझना है, राइट? इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, यू विल बी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड फर्दर. ओके, सो एरिया वाज गिवन ऑफ अ स्क्वायर, एक शेप है जिसकी ऑल साइड्स बराबर हैं. साइड्स S4 साइड्स आर इक्वल एंड दैट साइड इज अ फोटो फ्रेम. सपोज कि एक सीनरी बनी हुई है इसके अंदर, कोई फोटो है इसके अंदर, राइट? वी आर नॉट फेमिलियर विद द फोटो डिजाइन, बट I just draw randomly. Okay, its area is given 250 centimeters squared. Okay, area. What is area? Area means a covered space of this frame. Covered space occupied by this frame. So you can say that ये जो अंदर का पूरा एरिया कवर हुआ जिसपे ये बाउंड्री ग्रीन लगी, that was 250 centimeter square. Means that will be 250, that 250 centimeter square is the inside area of this frame. ठीक हो गया? मीन्स जितने साइज का ये एक फ्रेम था उसने जितना एरिया लिया हुआ था वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर था. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to understand the relationship that is basically an application of square and square roots. ठीक है? So area of a shape, area of a square क्या होता है? That is side into side, or you can say length into length, isn't it? Means L square. Okay, area was given to us and that was 250. So I can just replace it with 250, isn't it? Okay. The question in the second line of the statement, it says find the perimeter. Perimeter तो हम तब समझेंगे जब हमारे पास sides की values आ जाएंगी. So first we need to calculate it. Okay, we are calculating. This side is basically length. ठीक है? इसको length भी कह सकते हैं. You can even say it's a side. Clear हो गया यहाँ तक? Okay. Now, you know that you are going to apply a concept जो आपने अभी पढ़ा था कि किसी भी square को remove करने के लिए you have to take a square root. तो square root और ये equation है तो square root you will take on both sides. Is that okay? All right, done हो गया? Okay. Let me set a space, 1 minute. Okay. Now you know we just read few square numbers and you can apply the estimation method to find a nearest square number. You know, I'm going to write here some numbers like 15 square is 225, 16 square is 256, 17 square is 289, and we can say that 16 square is the nearest one. So I can just estimate it and I can just change the value, that will be 256. Or even you can write this. ठीक है? अभी right now मैं just ये जो choose किया है उसको लिख रही हूँ, तो there is no need to worry about that. तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. तो दिस टू आई कैन कैंसल इट, तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी. वंस वी विल गेट द लेंथ देन वी विल बी एबल टू फाइंड द पेरीमीटर. चलिए रिकॉल करते हैं अभी यहाँ तक कितना पढ़ा, कितना समझा. अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ है. एज पर दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम वाज गिवन एंड दैट वाज 250. तो मैंने ये यहाँ बनाया एक स्क्वायर, उसकी जो अंदर वाली स्पेस थी उसका एरिया दैट वाज कवर्ड एंड area was given 250 centimeter squared, right? Now we have to find the perimeter. And perimeter, what is perimeter? I will explain you later. To find the perimeter, we need to find the values of all sides.
So all sides value we can find once we get the value of this length. Okay. So now we know we can remove this square root by taking its power. तो ये मैंने इसको कट किया. 16 centimeter is the length. 16 centimeter is the length. So what does it mean? It means that ये जो sides थी, ये जो side आई है, ये 16 centimeter आई है. And remember, that is a hint also कि square का की all sides हमेशा equal होती हैं. All sides are equal. ठीक है? So अगर ये 16 है, तो ये भी 16. This one is also 16 and this one is also 16. Clear? Now, in the second line says find the perimeter. अब हमने निकालना क्या है? Basically perimeter निकालना है. And perimeter is what? Perimeter means distance around the shape. Let me draw this diagram, this square again. Okay. So distance around the shape. Area क्या था? Covered था, जो अंदर वाला हिस्सा था. तो but now we are talking about distance around the boundary. ठीक है? आप boundary पे suppose walk कर रहे हो और वो distance, or you can say sum of all sides. Sum of all sides. So in easiest meaning, I can explain perimeter is sum of all sides. So you can say it has 4 sides, 16. Second side is also 16. Third side is also 16. And the fourth one is also 16. So you can say that we can add them and get the answer. That will be 64 centimeter. So let me close this question again. That is basically an application, practical, real life example of square roots and square numbers. जिसमें आपको one frame was given, किसकी फॉर्म में? स्क्वायर की फॉर्म में. तो वो जो स्क्वायर की फॉर्म है, बेसिकली स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू लेंथ. तो हमने वहां से जो एरिया था, वो एरिया पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करके, एस्टिमेशन का मेथड अप्लाई करके, वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स साइड. एक साइड की जब वैल्यू निकल आई, तो वी कैन इजीली फाइंड द ऑल साइड्स की वैल्यू. व्हाई? बिकॉज स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है. The length of all sides of square is always equal. Clear? And once we calculate the side or length that was 16 centimeter, then we can easily find the perimeter. What was the perimeter? Sum of all sides means distance around the shape. Remember that. That is a basically definition. Distance around the shape. So, after adding the all sides, we can easily calculate the perimeter. I hope you understand the practical life. I hope you understand this concept clearly.